वबरकातुहू। ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। I would like to request Janab Khalid Attar sir to come on stage and felicitate Muhammad Al Hamid. I request to Muhammad Al Hamid, please come and receive your certificate. लगता है ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो धीरे धीरे उगता है। And I stand before you to explain what is computer. Computer is an electronic device that performs arithmetic and logical operation with speed and accuracy. Computer is used in almost every field. It is most unexpected. That is why this age is called as the era of IT. And now we cannot imagine a world without a computer. Computer has become very important nowadays. For listening, have a nice day. To share knowledge about software. Honorable members of Jamaat Usada, I am here to stand. My name is Dania Ahmad Al Hamid. Today is here to express my view on software. Software is a set of program and collection of software. It is the task to complete software. Application software, utility software, system software. System software is a program of computer program, and it is also hardware and software. Thank you. First of all, I would like to thank Sir Abdullah Al Jilani sir and Ahmed Al Jilani sir and the parents of students. Now I request Daniel Saleh Al Hamid to give detail about application software. I would like to thank the organizer for their kind invitation toward me to participate in this wonderful form. Today I am here to represent a speech about MSCIT course. Before joining this course, I know only basic things about computer. But in this course, I learned very deeply what is hardware, software, input and output devices and its uses. And I am able to manage things in computer system with the help of software like Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and MS Outlook. In MS Word we can create, edit and print documents. In MS Excel we can make bills, reports and attendance sheets, and we can do all type of mathematical operations. Excellent speech, Daniel. I would like to call up on stage Javeri Al Hamid to share particular opinion. Can be used to send messages quickly from one computer to another computer. Teacher can send assignment to student whenever the teacher is absent. Student may done their homework. मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्म को मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर सादे फितरत में नवा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर सादे फितरत में नवा कोई. थैंक यू. I would like to call upon stage Sumayya Al Hamid to explain hardware. To present a speech about hardware. The computer hardware is the physical parts of computer, such as case, central processing unit, computer, monitor, CPU, keyboard. Monitor is used to display data. I end my view hardware. Thank you. Information regarding internet. I stand before you to tell about internet. The internet is a global network of billions of computers and other electronic devices. With the internet, it is possible to access almost any information
communicate with anyone else in the world, and do so much more. You can do all of these while connecting a computer to the internet, which is also called going online. With the help of internet, many people making money, like in Instagram, watches, Google. I stand here to explain what is browser. A web browser is a software application for accessing information on the World Wide Web. The most popular web browser is Google Chrome, Safari, Firefox, and Internet Explorer. Thank you. Position holder have been waiting for. So this portion of event this portion of the event I hand over the mic to Hazrat ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala Nabiyyil Ameen Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. यहाँ बैठे हुए तलबा, उनके पेरेंट्स और मेरे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और मसरत का मकाम है कि हम इस बिछड़ी हुई हुकूमत को जो है तो सिखाने की कोशिश में कुछ न कुछ कामयाबी हासिल किया। और आज जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कंप्यूटर ये जो है रीढ़ की हड्डी है एजुकेशन की। अब बगैर कंप्यूटर की कोई चीज़ भी आप जो है तो उसको हासिल नहीं कर सकते। इसकी ये तो बहुत इब्तिदाई कोर्स है, लेकिन ये आपके अंदर जिला पैदा करने के लिए कोर्स शुरू किया गया है कि आपको चिंगारी लगाने के लिए कि आप ये चिंगारी से आप पूरी अपनी इल्म को रोशन करें। तो ये एक इब्तिदाई कोर्स है और हम ये इस बात की कोशिश मुसलसल करते रहेंगे कि अगर आपके अंदर ज़ौक़ तलब है, अगर इल्म हासिल करने की तलब है आपको और ज़ौक़ है ऐसा कि आप सीखना चाहें कुछ, तो हम इंशाअल्लाह ताला इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे कि किस चीज़ के लिए कितना खर्च होता। हम अपने तौर पर आपकी मदद से ताउन हासिल करके हम उसको आपको वो इल्म देने की कोशिश करेंगे। शर्त क्या है कि आपके अंदर भी तलब पैदा हो, तड़प पैदा हो। और देखिए, अब मैं बार बार ये कहता हूँ, शायद आपके कान को नागवार गुजरे कि ये दुनिया जो है तो हर दुनिया का कोई ना कोई पैटर्न रहता है। ये दुनिया इकोनॉमिक दुनिया है और एजुकेशन की दुनिया है। बगैर एजुकेशन के, बगैर तालीम के कोई लोग अपनी जगह रह नहीं सकते और तालीम एक जरिया माश का भी है। अब आप अगर एजुकेटेड है, आप तालीम याफ्ता है, तो आपके लिए अपनी रोजी रोटी का भी इससे बंदोबस्त हो सकता है, वरना जाए। और अगर आप गैर तालीम याफ्ता है तो आप दुनिया में जीना आपके लिए, हमारे लिए सब मुश्किल है। मतलब सब आपसे बड़ा थे हम सब है। तो बेहतर ये है कि हर शख्स ये बात की कोशिश करे कि अपने तौर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकता है वो हासिल करने की कोशिश करे। और कंप्यूटर को प्रायोरिटी इसको जो है प्रायोरिटी इसलिए भी देना है कि ये आजकल का ये मोड हो गया है कंप्यूटर, और तालीम इसके लिए ज़रूरी है। अब इसमें बहुत से ऐसे कोर्सेस हैं। अब आप देखिए ना, पूरी दुनिया जो है तो जंग जो लड़ी जा रही है, जो यहाँ से बैठ के कंट्रोल करके एक खास पॉइंट पर जो है तो बम फेंकते हज़ारों किलोमीटर दूर से, और वो मुकाम पर जो पहुँच कर बम फटता है। तो ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन हो सकी? कि कंप्यूटर के नॉलेज से मुमकिन हो सकी, उसको कंप्यूटर से कंट्रोल किया गया। तो अब हम में भी जो है, अब वो ज़माना जैसे तब्दील हो रहा है, हमको अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा और कंप्यूटर का इल्म हासिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। और एक बात ये ख़ास तौर से बोलूँगा कि मेरी माएँ भी यहाँ बैठी हुई है, बहनें भी बैठी है, तो ये आप लोग ज़रा जाग जाइए, अब नींद से बेदार हो जाइए। ये वक्त नहीं है सोने का, इसलिए कि हमारे बच्चों को तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। और तालीम हासिल अगर नहीं करेंगे बच्चे, तो आप जो है तो फिर आप हमारा जो है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखिए कि हम लोग जो है तो तालीम से इस तरह दूर हैं कि बच्चे, हमारे कुछ इल्म में आया था कि ऐसे बच्चे रात भर जागते हैं, सुबह दिन में बहुत ताख़ीर से उठते,
یہ قوموں کی ہلاکت کا انداز ہے. جو اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہ رہا ہے, جو اپنے آپ کو ختم کرنا چاہ رہا ہے, اس نے ضرور یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ راتوں کو جاگے اور دن کو جو ہے تو سوئے اور کام دھندا یا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. آرام تجدے اپنی اگلی نسل کے لیے اگر وہ کوئی بہترین تحفہ دے سکتے ہیں, وہ تحفہ ہے تعلیمی تحفہ. ان کو تعلیم دے کر آپ ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی بچہ جب تعلیم حاصل کرے گا تو وہ اس میں اخلاق بھی پیدا ہوں گے, اس میں تہذیب بھی پیدا ہوگی. یہ سب چیزیں ہر پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. میں اتنا کہ مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اذان بھی ہو رہی ہے. تقریباً ایسا لگتا ہے کہ آدھا سفر طے کر چکے اور انشاءاللہ بإذن اللہ most of the time I'm not here in the city, but usually I'm updated with the photos and the programs we are doing here. And as far as the computer is concerned, I mean the communication world, if you see it is called a global village. Now the world has become a global village. If you see the multi-storied buildings in different parts of the metropolitan and cosmopolitan cities, you do not know who the neighbor with you, but at the same time in the frequency of the second, you will find that millions of people are communicating with each other. And as far as the future of the computer is concerned, now what the knowledge I am having now at the moment, as now today if anybody becomes sick, we go to the doctor. But they are doing the studies, doing the research on this. Now whenever a child is born, what they will do, they will take his history. ایڈوانس ہو گیا اور فیوچر جو کمپیوٹر کے اندر آنے والا ہے, تو امریکہ میں یہ اسٹڈی ہے کہ کسی کے پاس ٹائم بہت کم رہے گا, تو جیسے ہی کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ رجسٹر ہو جائیں گا سسٹم کے اندر, اور اس کے جو بایولوجیکل پرابلمس ہیں وہ سب اس کے اندر فیڈ کیے جائیں گے. تو اس کے بعد میں جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فار ایگزامپل میں مالیال کہتا ہوں آپ کو کہ جیسے ہم کو لائٹ کا بل بھرنا ہے, انٹرنیٹ کا بل بھرنا ہے, یا کیش ودرا کرنا ہے, یا جو بھی کرنا ہے, تو ہم لوگ آج ATM یوز کرتے ہیں. تو فیوچر کے اندر آپ کی ہسٹری وہاں پر سب نوٹ کی جائے گی, اور آپ کو جتنا بھی جو بھی آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, انیشیل میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا بولو یا منیمم میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ATM کے تھرو ہوگا. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کو آپ کے جس طرح آپ کو بولتے ہیں کہ جس طرح آپ کا پن نمبر ڈالو, آپ کا یہ ڈالو, تو آپ کے پرابلمس آپ کو فیڈ کرنا ہے سسٹم کے اندر, تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کی ہسٹری تو رہے گی سسٹم کے اندر, تو آپ کو ایک پرسکرپشن دے دی گا میڈیکل کا, اور آپ وہ پرسکرپشن لے کے آئے تو میڈیکل سے دوا لے کے اپنا ٹریٹمنٹ کر لیں گے. تو جس طرح آج کل آن لائن ہو گیا, تو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی جو نیسیسٹی جو ہے کمپیوٹر سسٹم جس کو کہیں گے, تو جس طرح آج ایڈکٹ ہو گئے لوگ اس کے, آن لائن شاپنگ, آن لائن سب چیز آن لائن ہو گئی. سو اب اس میں جس طرح آپ جب بامبے میں یا بڑے بڑے سٹیز میں دیکھیں گے 50-50 منٹ بلڈنگ ہوتی ہے, تو آپ کو آپ کے پڑوسی کا نام نہیں معلوم ہوتا, مگر وہ ہوتے جو فریکوینٹ کیا مائکرو سیکنڈ کے اندر جو ہے ملینس آف لوگ ایک دوسرے کے ٹچ میں ہیں انٹرنیٹ کے. یہ ایک کمیونیکیشن سسٹم جو ہے تو اتنا فاسٹ ہے دنیا میں, جس نے جوڑ رکھا ہے کسی کو, اس میں تھوڑا سکون بھی برپا ہوا. ایک سیکنڈ MSCI کی جو نیکسٹ بیچ ہے وہ بہت جلد شروع ہونے والی ہے. جو آپ کے کانٹیکٹ میں بچے ہیں یا فیملی ممبرس ہیں, تو آپ ان کانٹیکٹ کر کے یہاں بھیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ بیچ میں بھی نیکسٹ منتھ سے اسٹارٹ ہو جائے گی.